Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. In this video, we will try to understand the concepts of regular expression using some examples. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन किया, उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन देखी, उसके रूल्स पे बात की और अब हम इसे कुछ जनरलाइज्ड एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं. ओके गाइस, so these are the examples. Number 1, regular expression for all the words are all the optional words over AB. Now if you consider AB, then all the words on AB might be all the words with length A, 1, A, B, then words with length 2, A, B, B, A, B, then words with length 3, A, and so on. And the cap symbol makes them optional. This means actually this is a general combination. What is this? This is a general combination of the words over A, B. Okay guys, so the regular expression for them can be A or B, clean closure, star, A or B star. Now remember it as a general combination. Now AB whole star means if a star is replaced, now star is 0 or more instances, so if star is replaced by 0, then the result is null. Okay, 1. And if star is replaced by 1, then the result might be A or B. And if we replace it by 2, then there will be the words of length 2. तो इसमें तमाम वो वर्ड्स आएंगे जिनकी लेंथ 2 होगी. अब वो 2 लेंथ वाले वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? ऑल एज, जैसे ए या एन ए फॉलोड बाय बी, ए बी, या फिर हो सकता है ऑल बीज जैसे ये, या अ बी फॉलोड बाय ए एंड सो ऑन. एंड इफ वी रिप्लेस इट बाय 3, दिस इज 0 और मोर. ओके, 0 और मोर. सो 0 और more means 0 or 1 or 2 or 3 or whatsoever. So the required regular expression is A or B whole star. Okay ji. So remember it as a general combination. Now a regular expression for A star. Now what can be A star? A star can be a null. Star means 0 or 1. Star means 0 or more. Sorry, 0 or 1 is wrong. 0 or more. So 0 means null. More means it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, 5, 6 and infinite. Okay guys, so if you consider, you will understand that this is actually the occurrence of or the instances of A. A is occurring 1 times, A is occurring 2 times, 3 times or 4 times, means this is 1 or more. From here it is 1 or more plus, but there is an optional null. So the result of A star इज़ एक्चुअली, ये जो ए स्टार है इसका जो रिज़ल्ट है वो या तो ये कैप सिंबल यानी नल है और या फिर ए की कुछ इंस्टांसेस हैं. तो इसे हम या को कैसे करते हैं? अल्टरनेशन. सो दिस मीन्स द रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ 0 और ए प्लस नल और ए प्लस. नाउ इफ़ इट इज़ नल, इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगा. ओके, सो इफ़ दिस इज़ नल, so the result will be this. And if it is A plus, so plus can be, plus means 1 or more. So plus means 1 or more. So A occurs 1 times or 2 times or 3 times or 4 times or whatever. So the regular expression for A star is null or
A plus. Now regular expression for A plus, if you look at it, A plus is equal to A 2 times A, 3 times A, and so on. Now if you look into the occurrences of A, it is single A, पहला A must है, single A is a must. इस सिंगल A के बाद यहाँ पर या तो कुछ है, there is something or there is nothing, या तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और या यहाँ पर एक A है, फिर 2 A हैं, फिर इसके बाद अगर हम जाएं तो इसके बाद 3 A's हैं. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस A इज़ फॉलोड बाय A0 और मोर, यानी इस A के बाद या तो A हो सकता है या नहीं हो सकता. आफ्टर दिस A देयर कैन बी एन A और नो, एंड 0 और मोर is actually star. So regular expression for A plus is A dot A star. Now if star is 0, then the result will be a single A. If star is 1, then the result will be this A followed by this A. If star is 2, then the result will be A, and so on. Now a regular expression for the words over AB is starting from A and ending on B. Okay guys, so regular expression for the words over AB. Now these are some words that start with A and end with B. So there is possibility of having nothing in between. हो सकता है इन दोनों के दरमियान में कुछ भी ना हो. ये भी हो सकता है, देखें यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में there is nothing in between A and B. It is possible to have an A between AB, start with A and with B and inside an A. ये भी possible है कि start with A and with B and in between there is a B. ये भी possible है कि start with A, दरमियान में 2A और फिर B. तो अगर आप गौर करें, so this is nothing, there is 1 and now there is 2 and then there will be 3's combination and so on. So this means the first condition is it is an expression that starts with A and ends with B, and in between lies nothing or some combinations of A and B. So we explored it in example 1 with the title as general combination, all the optional. Now the inside can be nothing or some combination of A or B. So this is the use of the general combination. Regular expression for this language. This language contains null, then 1 times A, then 2 times, then 3 times, then 4 times, and so on. So the regular expression is actually, if you see, this is one occurrence of one instance of A, this is 2, this is 3, and this is no instance. So this means this is A star. The regular expression for this is A star. Now look at this. A regular expression for the language having nothing means an optional null string, or AB, or AAB, or AAB. If you look at the structure, we can easily understand that there is an A followed by a B, then there are 2 A's followed by B, then there are 3 A's followed by single B. This means number of A's are increasing, but B, there is no effect on B. This is an expression that ends with B, and before B there can be an A or there can be nothing, and as there is an optional, that means कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर होगा.
Okay, guys. Regular expression for null AB, 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 AB. So this is one instance of AB. There are two instances of AB. There are three instances of AB, and there is nothing. So this means it is AB whole star. A regular expression for all the words that have at least two letters that begin and end with A and that have nothing but B's inside. रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द वर्ड्स ओवर ए बी. अब हमने जो भी वर्ड्स बनाने हैं, नाउ वी आर गिवन दैट कि ऑल द वर्ड्स आर बेस्ड ऑन ए एंड बी दैट हैव एट लीस्ट टू लेटर्स. उसमें कम से कम दो लेटर्स होंगे दैट बिगिन, जो कि ए से स्टार्ट होगा, एंड और ए पे एंड होगा, और उसके दरमियान में या तो कुछ भी नहीं है या कुछ बीज हैं तो कुछ भी नहीं, या बीज का मतलब है बी स्टार. सो दिस मीन्स कि इसका जो लैंग्वेज बनेगी, अगर मैं बी को ज़ीरो कर दूंगा तो देयर विल बी ए. अगर इफ़ स्टार इज़ रिप्लेस्ड बाय ज़ीरो देन द रिजल्ट विल बी ए. इफ़ स्टार इज़ रिप्लेस्ड बाय वन देन ए बी ए. इफ़ स्टार इज़ रिप्लेस्ड बाय टू then A, B, B, A and so on. So you may see the regularity. आपको regularity of the expressions नज़र आ रही होगी. Regular expression for language A 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 A. Now you can see that this is A there. So this is positive closure of concatenation of A. Now if you look at this language number 10, A, 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 and so on. There is a single A, there is single A followed by double A, there is single A followed by two times of A, then four times, then six times, and then eight, and so on. So this means an A is followed by nothing or some combinations of double A. Now if we make it, if we replace the star with 0, the result will be a single A. If we replace it by 1, the result will be A double A. If we replace this star by 2, then result will be A double A double A, and so on. For all the words over 0 1 with at least 1 1, all the words over 0 1 with at least 1 1, ये वो तमाम वर्ड्स हैं जिसमें वन कम से कम एक मरतबा ज़रूर आएगा. सो दिस इज़ एट लीस्ट मिनिमम, दिस इज़ द मस्ट वन. ओके गाइज, नाउ दिस वन कैन बी एट द स्टार्ट. हो सकता है इसके से पहले भी कुछ ना हो और इसके बाद भी कुछ ना हो सकता है इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट हैव ओनली दिस वन. देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग some zeros or 1 before it or nothing, and 0 or 1 after it or nothing. This means that 1 is preceded and followed by the general combination of 0 or 1. So if we make them these stars 0, so we will have at least 1 1, and in other cases we have the larger strings. Now regular expression with all the words over 0 1 with at most 1 1. Now at most 1 1 means there might be a single one and there might be no one. या तो 1 होगा या एक मरतबा होगा या 1 नहीं होगा. So this means this is 0 or 1 instance of 1 that may be preceded by some zeros or nothing, and that may be preceded by some zeros or followed by some zeros or nothing. Okay guys, regular expression for all the words with even number of A's. Even number of A's means there should be at least 2 A's. Now
there can be some B's in between or nothing in between. There can be some B's before these even A's or nothing. There can be some B's after that even number of A's or nothing. Okay guys, but even means not only 2 but it might be 4, 6, 8 or whatever. तो हम इसे यूं भी कर सकते हैं, we can do it like B star A B star A B star whole प्लस, और हम इसे राइट कर सकते हैं, अगर मैं इस बी स्टार को आई कैन राइट आउटसाइड ए बी स्टार ए प्लस बी स्टार. So this is the even number of A's. Now the next is odd number of A's. Odd means there can be a single A. Now the next odd number is 3. First is 1, then 3, then 5, then 7. So it needs 2 more A's. Okay guys, now these 2 A's are actually optional. One is must, because in odd there is the requirement of having at least 1 A. एक A आपके पास होगा, इसके बाद अगर आपके पास A's आएंगे तो वो आएंगे 2 या फिर 4, 2 or 4 or 6 or whatever. Okay, so we may make it star. Now अब इन दोनों स्टार्स के इनसाइड हम लिख सकते हैं B star just like even number of, and there is a possibility of having a B before A star. Regular expression for all the words over AB that contain both AB or BA. आपके पास आपके एक्सप्रेशन में इट इज़ अ मस्ट टू हैव AB और BA, ये दोनों ज़रूर होंगे. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इनसे पहले भी कुछ ना हो एंड इनके बाद भी. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग नथिंग बिफोर AB or BA and after BA or BA, and there is a possibility of having some combination of A or B before or after, so we make them star. Okay guys, so these are few examples regarding regular expression. In next video we will see a few example more about regular expression, a few more examples about regular expression. आप लोगों को अगले वाली वीडियो में कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स इस पे बताए जाएंगे. ये वीडियो आप देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. इनवाइट योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो. थैंक यू.